सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमित सर, बंटी सर और मैम को कि आज इस सुदूर क्षेत्र में भी इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी बच्चों के बीच में इतना टैलेंट है कि छोटा से लेके बड़ा बच्चा इंग्लिश के क्षेत्र में अपना प्रतिभा दिखाया। पता नहीं जब मैं आप लोगों के बराबर था उस समय मैं कूट को कोल्ड पढ़ता था, सूट को सोल्ड पढ़ता था, वुड को वोल्ड पढ़ता था। लेकिन अभी आप लोग इतना अच्छा इंग्लिश बोल के गए हैं, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का इम्पोर्टेंट आज हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा है। इंटरव्यू के क्षेत्र में जाओ या किसी भी क्षेत्र में जाओ, यदि आपके सामने वाला यदि इंग्लिश बोलता है और आप यदि इंग्लिश नहीं जानते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ही गिल्टी फीलिंग होता है। तो आप लोग के सर आप लोग को बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए सर। और इस क्षेत्र में इंग्लिश का एक नया दौर का शुरुआत कीजिए। पूरा यहाँ के क्षेत्र इंग्लिश के नाम पे ही जाना जाए, यहाँ के बच्चों का प्रतिभा इंग्लिश के नाम पे ही जाना जाए। तो बच्चों के लिए मैं 2 लाइन एक गाने के माध्यम से दोहराऊंगा। मैं चाहूंगा कि बच्चे लोग आप लोग भी दोहराइएगा ना जी। जागेंगे जगाएंगे, जागेंगे जगाएंगे, जागो भाइयों जागो बहनों, जागो भाइयों जागो बहनों, जागो जागो देश के जवानों। एक साथ गाएंगे अब, ठीक? जागेंगे जगाएंगे, जागेंगे जगाएंगे, जागो भाइयों जागो बहनों, जागो भाइयों जागो बहनों, जागो जागो देश के जवानों, जागो जागो देश के जवानों। सोने का दिन देखो भाई चला गया, सोने का दिन देखो भाई चला गया, जागने का दिन देखो भाई आ गया, जागो भाइयों जागो बहनों, जागो भाइयों जागो बहनों, जागो जागो देश के जवानों। बेस्ट विशेष फॉर योर कमिंग डेज। थैंक यू। क्या बात है। मैं एक बार चाहूंगा कि इनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। So now मैं बुलाना चाहूंगा रावण गवर्नमेंट स्कूल से मिस्टर भुवनेश्वर सर। प्लीज इनके लिए एक बार ताली बजा दें और हमारे लिए शुभ वचन दे प्लीज। First of all, I would like to welcome all the little children and parents who have come over here to attend this summit of education relating. There is no doubt from the Saluk Institute many children are improving day by day very much, and I hope you will be doing much better than better. As soon as you are facing these types of problems, you can achieve your goals, targets, because without doing labor hard and determination, you can't be able to achieve any types of successful. I would like to familiar all of the people who has come here to attend this summit and listen to the voices of children who has
gain a lot of knowledge in very few days. So it is very pleasurable moments for all the children who had achieved these impressive targets. First of all, I would like to sing a song which in English also. And after that you have to name that song. We shall overcome, we shall overcome. I would like to you also sing after that. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. That we shall overcome someday. This is a very favorite song, especially for children. Anybody can say this song in Hindi. What is the name of this song? Stand and say. बिल्कुल, absolutely right. देखिए ये क्या है? Overcome. Sorry for telling in Hindi because this day especially we are gathered here to promoting English. So for few moments I would like to sorry for that. Overcome that means विजय होना, कामयाब होना. हर कोई चाहता है कि हम कोई भी काम करें, either वो आप एजुकेशन हो, घरेलू काम हो, छोटे बड़े एनीथिंग एल्स, कोई भी काम हो, हर कोई का मोटिव यही रहता है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मेरा काम क्या हो, कामयाब हो, मैं कामयाब इंसान बनूं. तो कामयाब इंसान बनने के लिए कामयाबी की मंजिल को छूना पड़ता है और कामयाबी की मंजिल उन्हीं को मिलता है जो कामयाबी के जो नियम है, जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है. यदि नॉर्मली हर कोई सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहे विदाउट एफर्टिंग, इट कांट बी पॉसिबल. यदि हर कोई चाहे कि हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, उसके एक्सपेक्ट में यदि वो लेबर नहीं करे तो क्या ये पॉसिबल है? आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू, क्या हर कोई डॉक्टर बनने का सपना देखे और वो उसके अकॉर्डिंग लेबर नहीं करे तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं. इट इज बिल्कुल क्या है, इट इज एब्सोल्युटली राइट दैट आवर सक्सेसफुल, आवर achievements and our goal will be decided according to our work, according to our effort. It doesn't matter how much you study, how much you spend your time on study. It is more important that how you study, what points you are including in your study. That is more important that you spend your time on reading, studying and learning anything else. And I would like also to familiar all of you that today English is becoming a very important and very necessary language. Almost people think that English is a language. English is a language, foreign language. You know foreign language?
the language which relates from other country. You know, तो फॉरेन लैंग्वेज क्या होता है, जो हमें किसी और कंट्री से प्राप्त होता है. That means foreign language is a language which link all of us to other people, to other countries. Without, so we can say it, this English is a linking language. In normally we can say it connecting language. So if you want to connect yourself to the country of about country or internationally, then you have to know any type of connecting language, foreign language, that is called linking language. So if you talk in English, then surely you are linking yourself with the countries, with the other people who are sitting in their countries. So it is very impressive effort for yourself that you are studying, basically trying to improve your English skills. So my graceful blessing to all of you who are interested and given time to attend this seminar, you can say summit. One thing I would also like to introduce, that if you are spending your time, a lot of time for achieving your target, but if you are not doing it properly, doing in proper time, then your success is not be going in good direction, well direction. So proper time, proper way is more important than proper doing. So it's a big matter that in what time you study, in what way you study. Suppose that everybody know that day is built for doing, night is built for sleeping, taking rest. But if you do all your work at night and sleep at day, then surely your success will not be touch your foot. Because if you are going against the rule, then successful will not be meet with you. So we all have to follow the rules of nature. And one thing also we introduced, that changing is the rule of development, any type of development. If you do not change yourself, you can't be successful in your life. So at first you have to change yourself, you have to improve yourself, then you can achieve any type of challenging or successful targets, goal, and you make yourself a special person. You know that our country is the second largest, second populated country in the world, but all people are not in the best stage, in the good stage. Almost people are in average condition. If you want to take yourself in good stage, good platform, then you have to be a good person, a better person, and after that a best person. And for best person you have to effort, you have to do according to the best person.